Okay. But you start. Yes. I'm sorry. Hello. A very good evening and a very warm welcome to this evening, my dear friend. जैसे आप लोग जानते हैं मेरा नाम रुचि पहुजा है. ऐसे तो by profession I'm an educator and I'm a healer, and apart from that I'm also an LT remedial educator. And yes, the gratitude coach. आज जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं, do you believe in magic? अभी जो आपको पिक्चर दिख रहा है सामने, थैंक यू सो मच हेमा जी. ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है. ऐसा क्यों दिख रहा है? Very simple. If you believe in magic, you will be able to see the magic. If you do not believe the magic, you will not be able to see the magic. So therefore, the picture is depicting that. So if you do, so my question to all of you today, please mute yourself. All of you, please mute yourself. Okay. So my question to all of you is, do you believe in magic? आप अपनी chat पे फटाफट से डालिए yes or no. Do you believe in magic? Please put in chat yes or no. Let the chat roll. Start rolling. Yes, very good. Naina, सबसे पहले yes. Hima ji, yes. Wonderful. Hirani ji, yes. Madhu ji, yes. Oh, so since we all believe in magic, we will surely feel it and feel it. Yes, we'll start reading. Sir, we'll start reading. किशोर जी scroll करेंगे नीचे. Anybody would like to read? किशोर जी आप पढ़ेंगे? कौन पढ़ना चाहेगा? Anybody who would like to read? If nobody wants to read, I can read. चलिए, we'll start. नहीं पढ़ूंगा, आवाज है मेरे बाजू में, नहीं तो मैं पढ़ता था. नहीं. कल मैं पढ़ूंगा खास. Yes sir, thank you sir. Sir, we cannot hear you. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916-1990, a writer. Remember, when you were a child and you looked at life in total wonder and awe, life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, or butterfly twittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. Yes, those who don't believe in magic will never find it. I would request all of you to write this line on your heart. Those who don't believe in magic will never find it. It is not a threatening. It's just something for us to remember. And remember when we were a child, आप देखिए जब हम बच्चे होते हैं, हमें सब कुछ इतनी जल्दी क्यों मिल जाता है? हमें सब लोग टॉफी दे देते हैं, मुझे कोई गुड़िया चाहिए तो वो मिल जाती है, मुझे कोई गिफ्ट चाहिए तो वो मिल जाता है. ऐसा क्यों है? Because our receiving is open. We are open to receiving. Whatever we want, we just ask it, and therefore we get it. Yes, sir. Yes, sir, Kishore ji. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it, and he never let you down. How many of you still believe that there is a tooth fairy? I also did this. Yes. How many of you did this? Me. Yes, me also. We all believed and see, this whole universe, it is magical. It is energetic. Whatever you believe, it will come back to you. Yes, sir. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. Who believed that the life was magical? Before I move further, I'm sure everybody can understand English. हाँ, मैं bilingual तो जा रही हूँ, but सबको English चलेगी ना? If anybody, I'll still go bilingual, not a problem. ये सारे बिलीफ किसके हैं? जब हम बच्चे थे, जब टूथ फेरीज में भी विश्वास करते थे, सेंटा क्लॉज में विश्वास करते थे, पेट्स के साथ, टॉयज के साथ
We had all the wonderful time, the fulfillment, the joy. Abhi kahan hai? Yes, sir. There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. Dear friends, when we were kids, jab hum bacche the, we never used our mind. We never used any logic. If this mind was capable of doing everything, तो हमें कोई challenge ही नहीं होता अभी. So हम जब छोटे थे, we did not use logic. आपने कभी देखा है, मैंने बहुत बार देखा है, रास्ते में पहले एक पत्थर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे कोई टीका करके जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर कोई फूल रख के जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो एक बड़े दूसरे पत्थर पे रखा जाता है. इवेंचुअली इट टर्न्स इनटू अ मंदिर. पत्थर वही था. क्या चीज बदल गई? फेथ. लॉजिक नहीं लगाया हमने उस पे. तो जब हम बच्चे थे, हमने कभी लॉजिक नहीं यूज किया. अब हम लॉजिक यूज करते हैं हर चीज में. आपको यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ. 2 लोग गए मंदिर में और उन्होंने कहा कि आज तो देखते क्या दिखता है भगवान जी के पास. बाहर आके एक ने पूछा क्या दिखा? अरे भगवान जी बड़े मुस्कुराते हुए मुझे प्यार से देख रहे थे. और दूसरे ने कहा मैं तो देख रहा था भगवान कब मुस्कुराएंगे. राइट डियर फ्रेंड्स? सो देखना है मुझे, तो ये बुक में भी वही सब सिखाएंगे हमें. क्या देखना है. Yes, sir. I am here to tell you that the magic you once believed in its true, and it's this disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Continue, sir, please. You may not see reindeer fly, but you may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to sorry? One second. Let me tell you one thing, my dear friends. We all know this. ये जो यूनिवर्स है, इसमें अथाह है, बड़ा बड़ा है. इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं. यदि कहीं पर भी दूध का टैंकर गिर गया और आप उस दूध को लेने जा रहे हैं, तो कोई छोटा सा मग ले गया, कोई छोटा सा कप ले गया, एक आदमी ने तो बड़ा सा ड्रम ले लिया. तो इस यूनिवर्स में तो भरा हुआ है. आपको क्या चाहिए? आप क्या लेके जाना चाहते हैं अपने साथ? So this is all is about how much you want to take it from the universe, and this universe vibrates. Everything in this universe vibrates. अभी मैं हिरानी सर से यही बात कर रही थी कि हम सब लोग एनर्जी फील्ड्स हैं. हम सब एनर्जेटिकली वाइब्रेट करते हैं. आप देखिए ना, अभी आपने किसी के साथ फोन करके तुरंत उसका फोन आ जाता है, तो हम कहते हैं क्या टेलीपैथी है? ये टेलीपैथी नहीं है साहब, ये वो आप और वो उस वक्त सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर गए. तो ऐसे ही जब आप हायर एनर्जीज के साथ वाइब्रेट कर जाते हैं, यू अट्रैक्ट थिंग्स. आप अपने पास उनको अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज हाउ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स ऑपरेट्स. So therefore it is very important that we vibrate at a high vibration. Yes, sir. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago, when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yes, we are not talking about something new. It is 2000 years old. We all know that. So therefore, if there is doubt, please wipe it away.
A great mystery is revealed. Yes, sir. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, my dear friends. You see, I would like you to write these lines also somewhere. Sir, please scroll it down for a while. Yeah. Scroll up. Whoever, Yeah. whoever has got gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Dear friends, this is not to threaten us, this is not to, को डराने के लिए नहीं है, ये हमें याद रखने के लिए है, क्योंकि gratitude is a very small thing, but it goes a long way. If we want to be more happy, or if we want to be thankful, this is what it is. So gratitude is a very small thing which should go a long way in helping us. So whoever has gratitude will be given more. That is what we have to remember. By the reveal, how many of us think that whatever this has been written, you would like to practice it? How many of you feel? Put in chat, me. I would like to practice it. Because then it shows you have faith. Whenever you will have faith, it will take you forward. Whenever you will have doubt, you'll go behind. Yes, very good. Hirani sir, Madhuji, Kevin Shahji, Madhuji, very good. Nishaji, wonderful. You're already doing it. Very good. By the reveal, yes, sir. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. From the my dear friends, there are questions. We'll take it at the end. We are talking about gratefulness. We are talking about gratitude. Can anybody give me one example? Like if I'll ask all of you, there are 18 of us together. If I ask how many of you say thank you, all of us would raise our hands. I say thank you. But do you think this thank you and gratitude, or to be grateful, when we say thank you, when we are grateful, are both same? If not same, what is the difference? How do you say, oh, this is not empty thank you? Yes, sir. Yes, ma'am. From the Quran. Kishore, sir. One second, Kishore, sir. Let me take from anybody who's interested to answer me here. Yes, we all thank, right? Let me give you one example which I've been quoting, because that is a real life example. A real life example I'll give you. Some time back, my husband Kishorji, he met with an accident, so he was not able to drive. So one of his cousins, he took us around whenever we wanted to go out. So we used to say thank you to him. After some time, during Corona time, peak Corona time, my mother was here. And unfortunately, that night, her sugar level went really down. And I was not at all aware of the symptoms. I did not know, we did not know what to do. Frantically, we were calling the ambulance. Nobody answered. We did not know. And somehow that cousin, we called our same cousin in the middle of the night. Now, when he came in the middle of the night, he said, "Ki Bhabhi, inko to sugar kam hai, inko
मीठा पिलाओ, और हमने उनको मीठा पिलाया, तो she was, after some time, she was all well. Again, I told them, thank you. See, thank you when he used to take us around, we said thank you. Thank you in the middle of the night when he came, something around 1 or 1:30, he came down, and it was raining like cats and dogs. So in the middle of the night when he came, and when he was leaving, I still said thank you. Do you think by both the thank yous were same? For sure, no. So my other thank you was with lot of, emotions, feelings from the bottom of my heart. That was gratitude. Although we all keep saying thank you the whole day, but just check yourself. Is that thank you same as the one which I felt in the middle of the night when he was leaving? That is gratitude. So we have to learn to see the difference. Yes, sir. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verify my punishment is indeed severe. It doesn't Yes. matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. My dear friends, I feel जो चीज सब दूर चलती नहीं है, उसमें कुछ तो दम है, right? आपके यहाँ पर भी है, मेरे यहाँ पर भी है, लंदन में भी है, यूएस में भी है, कुछ तो चीज कॉमन है, सब दूर चल रही है. So you find in all the scriptures, in all the religions. So we will give it some weightage, yes, till we read the book. But yes, we have to have the faith. Yes, sir. Yes, sir. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creatures are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Yes. What is law of attraction? We all know what is law of attraction. My dear friends, the law of attraction is whatever thought, whatever feeling we have, we attract more of it. You see, some other days when you feel awesome, what a day was today. Everything went easy and as if jigsaw puzzle mein one by one sab cheez ho gayi. And some of the days are not good. The day is not good and bad. What is here, the thought process which we are going through, that is making all the difference in life. Law of attraction, it works, for example, today this morning, my maid is not coming. For example, my maid is not coming. Now, she has called me to tell me that she is not coming. We work on choices, dear friends. We all have, under all circumstances, we have choices. Two choices are always there. Now, one choice is I should crib and shout and jitni gali aati hai usko do कि आज फिर छुट्टी मार ली उसने, मुझे सारा काम करना पड़ेगा. Second choice, उसने मुझे टाइम पे फोन तो कर दिया. Now I can plan my day. So now the choice is with me. What do I want? So depending on this choice would be my thought process. If I am thinking good, I will attract good. I might find somebody helping me out. I might go out for lunch or dinner, whatever. So it is entirely my choice. My choice, what am I feeling? Right, dear friends? So this is how it is. Yes, sir. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. Yes, for sure. You see, these are the lines. Some of us, किसी न किसी ने तो बोली है ना. So some of us use these lines
Now tell me, हम जिस जॉब के लिए इतना क्रिप करते हैं, जिसको इतनी गाली देते हैं, उस जॉब से तो मैं पैसा लेके अपनी फैमिली को I'm bringing up my family on the basis of that money. अब उसी मनी को गाली करके, उसी जॉब को गाली करके, how will I grow? I cannot. In the same way, my child, you ask some of the mothers, how is your child? They have a long list. मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता, मेरा वो बच्चा नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. So, my dear friends, we have to keep checking ourselves. अब सब लोग बोलते हैं be positive, be positive. करना कैसे है be positive? Keep going and check your thought. What kind of my thought is going on? One thing very clear. ये जो दिमाग है ना हमारा, it can never be empty. It can never be empty. I request all of you, please mute yourself. So, ये दिमाग जो हमारा है, it cannot be empty. यदि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो तो फॉर श्योर नेगेटिव के लिए जगह बनानी पड़ेगी आपको. So it entirely depends what am I thinking. And the more you think about it, the more you catch yourself, you will know how to do it. But if you think about what you're grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you are magnetized. It is universal law. Yes. Now, my dear friends, some of us say, what is abundance? I keep talking about this abundance. Most of us say abundance is money, riches, jewelry, property, big house. Is that only the abundance? No. If you've got plenty of books in your house and you get time to read those books, you've got abundance of knowledge, wisdom. If you've got a very supportive family who is behind you, supporting you, that is abundance. You have got good, loyal friends, which are there in thick and thin. This is what is abundance. So abundance is not only riches. All these things together, that is abundance. So whenever we are grateful, what are we attracting? We are attracting, you see, एक बहुत तरीका, simple सा तरीका बताती है, रॉन्डा ही बताती है कि how will you see कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है. आप एक बार जब चेक करेंगे अपनी लाइफ में और क्या अच्छा नहीं है, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने वहां पर ग्रेटिट्यूड नहीं करा है, और जहां पर अच्छा है वहां आपने ग्रेटिट्यूड करा है. This is how things are. This is how we take things into consideration. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law. And they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says, every action always has an opposite and equal reaction. Yes, you see, as we're talking about that this world is a mirror. Whatever you give up, give it to it, it will come back to us. In other words, as you read, whatever you sow, you reap. So now, if I am not smiling, if I am cribbing, if I'm complaining, what will I attract into my life? Naturally, all those which we are talking about. So we have to keep checking ourselves. What are we giving? You see, expectation तो हमें सब चीज से रहती है कि ये भी मेरे साथ अच्छा हो, वो भी अच्छा हो. तो उसको expect करने से पहले मैं भी तो देख लूं कि मैं क्या दे रही हूं. So this is how the world operates. Whatever you give out, you will receive it back. And every action always has an opposite and equal reaction. Let me put it this way. Every gratitude will bring more and more of abundance. Every time you are grateful, you are attracting something good in your life. Therefore, whatever your action is, equal and opposite would be your reaction.
So in other words, more is the gratitude, more is the receiving, for sure. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yes. The more you give, the more you receive. Always remember this line. आप जितना ज्यादा देंगे, आपके पास उतना ज्यादा आएगा. 2 मिनट की टास्क है. जब भी आपको ग्रेटिट्यूड देना होगा ना, माय डियर फ्रेंड्स, 2 मिनट लगते हैं. और ये 2 मिनट का टास्क आपकी जिंदगी बदल देता है. बट हम क्यों नहीं करते हैं? क्या होता है, हम हमारी लाइफ को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, या वी आर सो यूज्ड टू इन आवर लाइफ दैट वी डोंट ऑब्जर्व, नोटिस व्हाट आर स्मॉल गुड थिंग्स इन आवर लाइफ. तो जब हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते. तो अब हमें करना क्या है? We have to appreciate all the small things which are there in our life. For example, I'm so grateful to all of you to join and be with me on this journey of 30 days. So grateful I am to all of you. Yes. The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind. The power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said, the gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Cherokee to the Tahitians, Eskimo and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Yes. Beautiful line. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. मुझे कुछ थैंक्स देने के लिए नहीं दिख रहा है, तो कहां पर प्रॉब्लम है? मेरे अंदर, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा कि मैं थैंक्स किस चीज के लिए कर रही हूँ. Right, dear friends? So it is so very important to give thanks. Now this 2-letter word, thank you, it is so very powerful. एक छोटी सी लाइन कही जाती है कि if you say a prayer, thank you, throughout your life, that will suffice. आपको कोई और प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है. यदि आपने सिर्फ थैंक यू कहा ना, थैंक यू सिर्फ एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वर्ड्स के साथ नहीं होना चाहिए. It should have a lot of feeling. So if that thank you is there, that is itself a prayer. इस जीवन को तारने के लिए ये थैंक यू वर्ड अपने आप में बहुत पावर रखता है. सिर्फ इसको सही तरीके से पकड़ के हमें चलना है और थैंक यू को बोलना है. 2-letter word which is so much of power. और ये हम देख ही रहते, सारे रिलीजन्स में हमने पढ़ लिया कि they are talking about it. So all the big personalities, Muhammad, Jesus, you name it, everybody is talking about gratitude. तो my dear friends, when it is such a simple thing, और हमको इसको सिर्फ थोड़ा सा, एक और चीज है डियर, यदि आप कहेंगे कि मैंने आज पढ़ लिया और हो गया और मुझे आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज है. फॉर ग्रैटिट्यूड वी हैव टू बिल्ड अ मसल. हम जब तक रोज नहीं करेंगे ना, तो थोड़े दिन में चला जाता है. I'll show you my where I write. ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है और ये मेरा चौथा जर्नल है जिसमें मैं लिख रही हूँ. जब बीच में एक सा टाइम आया था, मैं 15 दिन नहीं लिखी थी,
I could feel मेरे expressions ही बदल गए. आपको बहुत चेंज लगता है अपने आप में जब आप लिखने लगते हैं. वरना तो क्या हो गया, एक बहुत अच्छा स्पीच है, सुन लिया मैंने, खत्म हो गया. तो जहां मैं हूं मैं वहीं रहूंगी. I will not change my life. So if I want to change my life, I really have to build the muscle. और वो मसल कैसे बिल्ड करेंगे? अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप जिम जाते हो? हाँ जाती हूँ. 10 किलो उठा सकते हो? नहीं उठा सकती हूँ. हाँ मुझे 15 दिन बाद मिलना, फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैं 10 किलो उठा सकती हूँ कि नहीं. कैसे हुआ? रोज प्रैक्टिस किया ना मैंने, 2-2 किलो उठा के. तो यहाँ पर भी तो वही चीज है. I have to practice doing it. The more I practice and see the magic. Yes. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to the others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Okay. Isaac Sir. You see, my dear friends, Albert Einstein, he used to say 100 times. Can anybody tell me how many seconds are there in a day? Anybody? How many seconds are there in a day? There are 24 hours, we all know. How many seconds are there? Let me see in chat. किसी ना किसी सीए ने तो डाल ही दिया होगा. Something around 87,000. Something around 87,000. अब my dear friends, मुझे एक बात बताइए, 87,000 में कितनी बार थैंक यू बोलते हैं हम दिन भर में? 87,000 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में. 86 वो मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली. कितनी बार हम थैंक यू बोलते हैं? क्या हम इतने 86,000 सेकेंड्स में, और एक सेकेंड, एक थैंक यू बोलने में कितने सेकेंड्स लगते हैं हमको? फ्रैक्शंस, right? So when he used to say 100 times thank you, and you see his life for us is to study. अच्छा, जितनी बार आप थैंक यू बोलेंगे, what are you attracting? You are attracting things for which you will be more and more grateful, saying thank you more and more. चाहिए कि नहीं हम सबको? More and more. फिर मांगे more and more. Yes, हम सबको चाहिए. So we will remember thank you. When he can say 100 times, कुछ मैच तो हम भी मिला सकते हैं ना इनके साथ. So that depends from person to person. कोई competition नहीं है. We will start saying that with feelings. Yes, my dear. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to the science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. If I want it in my life, if we want it in our life, we have to practice it. Why we have to practice it? To get it more. मैंने आपसे क्या कहा? ये यदि आज मैंने या 30 दिन तक भी मैंने इसको सिर्फ सुना, तो 31वें दिन के बाद ये फेड होना शुरू हो जाएगा. आप देखिए 30 दिन तक इसकी मसल बना रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, और आपने जहां इसको छोड़ दिया, जहां आपने नहीं किया, देखिए किसी दिन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट आप उसको
विजुअलाइज तो कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो, be in this power of gratitude. And then when we do it, we learn to observe it also. अभी अपन एक दो दिन में जो एक्सरसाइज करेंगे आपको उसमें पता चल जाएगा. इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, आंखें खोल देने वाली एक्सरसाइज है कि हम तो क्या सीखते थे. नरेंद्र जी विल कम टू यू, आपका हाथ बढ़ा है आपने, विल टॉक टू इन द एंड. ये सब तो हमको ये वी हैव टू बिल्ड दिस मसल स्लोली बट रेगुलरली विदाउट फॉरगेटिंग इट. क्या करना रहेगा हमें? ग्रैटिट्यूड करना है. ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? थैंक यू बोलना है. थैंक यू कैसे बोलना है? नॉट ओनली वर्ड्स, इट शुड हैव फीलिंग, इमोशन जाना चाहिए उसके अंदर. मन से बोले तो आपको लगेगा मेरा दिल खुल गया है, मेरा हार्ट चक्रा खुल गया है, ऐसा आपको महसूस होगा. और एक टेस्ट बताती हूँ, यदि आपने ग्रैटिट्यूड किया आपको तुरंत से बहुत खुशी मिलेगी. यू फील वेरी हैप्पी. दैट इज अ साइन that you are in gratitude. If you are in gratitude, you will feel immense happiness. एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपको, वो आपको बताएगी कि yes, you are on the right path. Yes, sir. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. Yes, my dear friends, हम जब छोटे होते हैं या हमारे बच्चे जब छोटे थे, तो जैसे कोई उनको कुछ देता था तो हम क्या बोलते थे? आंटी को थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू बोलो. तो हम इनडायरेक्टली बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि व्हेन यू आर रिसीविंग समथिंग यू शुड बी ग्रेटफुल. अब वो वाली चीज हम बचपन में छोड़ देते हैं. हम बच्चे को सिखाते सिखाते खुद छोड़ के आते हैं टू सम एक्सटेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट ग्रेटफुल पीपल. आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अप हियर इज, by automatic or autopilot mode pe human beings, they look at complaints more than we look at the good things. So we tilt towards complaints more. Aisa nahi hai ki we don't know how to be grateful. Now, so in that case, what are we supposed to do? We are supposed to, again I'm using that word, we have to be grateful in life. So this is stories of the author Rhonda Byrne, when she was 6 years ago, when she was not grateful, but then she used thank you. आज हमारे पास कोई पार्सल देने आता है, जोमेटो वाला आता है, कोई भी आता है, पानी देने आता है, हम उसको बोलते हैं थैंक यू. बट माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग उस वक्त अपने आप को जरूर से चेक करना. और अब तो आपको याद आएगा कि रुचि ने कहा था कि मुझे चेक करना है कि ये थैंक यू में फीलिंग है कि सिर्फ वर्ड्स है. Yes, sir. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Yes. When do we feel that more challenges are there? सुबह से लेकर काम ही करती रहती हूँ, कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कराता है. There I am not being grateful. Why am I not being grateful? Because I am not observing, I am not noticing. If you will sit down to notice, you will find that the whole universe is conspiring to help you. So we have to just learn to notice. How to notice, where to notice, what is gratitude there.
But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And the result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the Yes. first time, Yes. As I told you, receiving is directly proportionate to your gratitude. The more you do it, the more you will receive it. We will see it with our own eyes. for the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had all the previous years. Once again, sir. Yes, Umeshji, you have raised your hand. Something important? Or is it a question? Umeshji? Yeah, it's a quick question, miss. But Can later on, we- we can can take it. Yeah, Sure, please. Yeah. sure, Thank sure. you so much, Thank you, sir. miss. Thank you so Thank you, much. miss. Yes, Thank you. so much. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Okay. So more than anything else, I felt happier than I thought it was possible. So further, I think we will read tomorrow. So I think till here, if we summarize whatever we read, it is that we are talking about gratitude. Very simple way of getting is to feel that thank you, to get into that feeling. And this gratitude works on the law of attraction, like other laws, gravitational law, other laws. You see, the world works on laws. आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक शेर ने किसी हाथी को जन्म दिया हो. आपने कभी भी नहीं देखा होगा आम के पेड़ से इमली आई हो. Everything is governed by laws. So there is this law. और दूसरा एक चीज और है, ये जो यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है, we should not get into कैसे, कब और क्या. Let it take its own course. और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, आप जब तक ये 30 दिन तक ये बुक पढ़ रहे हैं ना, आप अपने लॉजिक्स को बिल्कुल भी मत यूज करिएगा. Just take whatever is coming and just see. देखिए साहब, अब तक जो जिंदगी हमने जी, यदि मैंने रोज चल के ऐसे चल के मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, तो लेट मी ट्राई दिस वे. शायद इस तरह चल के मुझे कुछ और नया मिल जाए. तो लेट अस ट्राई दैट if that is possible. Right, dear friends? So this works on law of attraction. And the law of attraction says, like attracts like. There are days जब आप रोज, not रोज, there are days जब हम बहुत अच्छे मन से नहीं सोते हैं. जब हम अच्छे मन से नहीं सोते हैं, हम अच्छे मन से नहीं उठते हैं. हमारी सुबह खराब हो चुकी होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है आपका रात को. तो जिस थॉट के साथ आप सोए हैं, उस थॉट के साथ, if that is something very not good, next day is grumpy for sure. So from today, one thing you will ensure, my dear friends, that before you sleep, कोई भी worry है, tension है, challenge है, everybody has it. Just last thing, think of something good which has happened in your life. Something good you hear and sleep. Last thing. Let that thought be in your mind and see how your sleep is. I'm sure it's going to be very different. I'm sure, very different. Yes, sir. Yes, Umeshji. You're welcome, sir. जी मिस, आपने कहा ग्रेटिट्यूड, बट एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटिट्यूड? जस्ट सेइंग थैंक यू twice, thrice with great emotion, or folded hand, or what? मैंने आपको एक And I एग्जांपल have दिया था. two हाँ सर, yes sir. Well, let me answer two you one things. by one, sir. I will जी let me जी answer जी you मिस. one by one, sir.
जी आपने मिस मेरा जी। वो एग्जाम्पल सुनाया था, मैंने एक एग्जाम्पल सुनाया था स्टार्टिंग में, आपने सुना था सर? नहीं नहीं सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया इंटरनेट की वजह मैं से। आपके लिए ही रिपीट करती हूँ वो एग्जाम्पल। जी मिस। मेरे हस्बैंड का कुछ टाइम पहले, करीब 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर में जी फीमर बोन का फ्रैक्चर हुआ था, तो ही वाज नॉट जी। एबल टू ड्राइव। तो उसकी ओके। वजह से उनके कजिन, हमको कहीं आना जाना होता था तो वो हमको ले जाते थे। जी। तो जब वो हमको छोड़ते थे तो मैं उनको हाथ जोड़ के मन से थैंक यू बोलती थी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ओके। इतना टाइम देना बड़ी बात है ना, और एक जी बार जी नहीं है, बार बार है। अब जी। उन दौरान कोरोना बहुत पीक पर था उदयपुर में भी, और ओके आधी रात के टाइम मेरी मदर की शुगर डाउन हो गई। मुझे शुगर के ओके। सिम्टम्स नहीं पता है कि क्या होता है उसमें, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। अब मेरी मम्मी ना जी कॉन्शियस है ना अनकॉन्शियस है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। हम लोग एम्बुलेंस के लिए ट्राई करे जा रहे हैं, हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है क्योंकि पीक कोरोना चल रहा है। फिर हमने जी। उसी कजिन को रात को, आधी रात करीब 1-1:30 बजे, हमने उनको वापस फोन किया कि ऐसी ऐसी हम्म। हालत हो रही है मम्मी की, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। वो आए तो उन्होंने बताया कि इनका शुगर लेवल डाउन हो गया है, आप इनको कुछ ओके मीठा खिलाइए। तो जब मैंने उनको मीठा खिलाया तो शी वाज विद सम टाइम शी वाज फाइन। अब ओके। आधी रात को करीब उनको 2:30-3 बज गए ये सारे काम होते। कृपा जी प्लीज हाँ आप म्यूट कर दीजिए। तो आधी रात हो गई उनको, आई मीन 3 बज गए उनको जाते जाते। हाँ अब हाँ साहब मैंने उनको वापस से थैंक यू बोला। मेरा हाँ। आपसे क्वेश्चन है उमेश जी, कि जब वो जी हमको आते थे ले जाते थे तभी मैंने उनको थैंक यू बोला, ठीक है, जी। और आधी रात को 3 बजे जब वो जा रहे हैं मैंने उनको फिर थैंक यू बोला है, तो मेरे जी। दोनों थैंक यू सेम होने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, रात वाला तो काफी मतलब वो होता है कि इट इज कोई अपना पर्सनल टाइम और रेस्टिंग टाइम छोड़ के आया है। बाकी नॉर्मल सुबह इट इज ओके। बट आई एज अ स्टूडेंट आई वांट टू लर्न आल्सो कि ऑफ कोर्स या यू आर राइट कि रात का इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी डीप हार्टेड थैंक यू होना चाहिए है ना कि सर? इफ वी आर बेंडिंग आल्सो फाइन। यस। सो जी जी दिस थैंक यू विल बी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये ना वो ना आते और मुझे ना बताते, मेरी मम्मी की ऑलरेडी 30-32 पे चल रही थी, और नीचे चली ओ जाती और वो चली जाती, तो कोमा। मुझे, मैं क्या कर पाती? ट्रू 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 तो यस। ही हेल्प मी इन सच अ क्रूशियल टाइम। और उस दिन जी बरसात जी। भी ऐसी पड़ रही थी कि आज ना पढ़ूं तो किस दिन पढ़ूं। ओ हो तो ओके। फिर मेरा थैंक यू कैसा वाला था, ये मेरा एग्जाम्पल देने का पर्पस है। जी ये थैंक जी। यू, ये ग्रेटिट्यूड है सर। ओके आई गॉट इट। समझ यस, गया मिस। थैंक यू सो और मच। एंड दूसरा हमके फाइनेंशियल एंड हाँ, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल आई एम क्वाइट ओके, बट जॉब का प्रॉब्लम था तो प्रोबेबली कमिंग डेज में सॉल्व भी हो जाएगा। यस, एंड आई एम हैविंग सम एज पर मेडिकेशन एज पर डॉक्टर रिपोर्ट आई एम हैविंग शुगर, बट आई डोंट बिलीव, आई सेड आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, लेट योर परफेक्ट। शुगर गो टू हेल। लेकिन शुगर अप भी नहीं होता है, डाउन भी नहीं हो रहा है। तो मेडिसिन दे रहे हैं मुझे, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। आई एम सेइंग कि मेरा पेनक्रियास से जो इंसुलिन आना चाहिए वो आए तो आई विल बी परफेक्टली ऑल राइट पर्सन इवन एज पर मेडिकल रिपोर्ट। तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि उसको पेनक्रियास को एज अ हेल्थ वाइज एंड फाइनेंशियल स्टेटस में कैसे मेरा इंप्रूव करूं। सर आप ये जो 30 डेज की जर्नी में रहेंगे ना, आप जी ये जी सारी चीजें सीख जाएंगे। जी मिस और ओके। दूसरा 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 मैं एक चीज और बोल लूंगी, आप में से किसी से ये जवाब चाहिए रहेगा मुझे, जी। कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, ठीक है, और मेरा जी मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और सब चीज नॉर्मल है। तो अपन, अब जनरली क्या होता है, अपन उससे पूछते हैं क्या हुआ आज आपने टेस्ट कराया था, अरे कुछ निकला ही नहीं यार, भाई क्या चाहते हैं हम? तो क्या ओके हम यहाँ ओके। ग्रेटफुल हैं कि अनग्रेटफुल है? जी 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 गॉट इट। it's something to ponder. We should ओके sit down and ponder over it, कि यहाँ मैं ग्रेटफुल हूँ कि नहीं हूँ। सी इतनी छोटी ओके छोटी चीजें हैं लाइफ की, ओके नो रॉकेट साइंस, ओके। राइट? वंडरफुल, जी तो थैंक यू ऑलवेज सो मच बी सर, ग्रेटफुल। थैंक यू मिस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू मिस। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। सर एक और सर आए थे, नरेंद्र सर, आपका भी, आपने भी ना हाथ उठाया था, नरेंद्र सर, नरेंद्र सर। Yes, madam. Good evening. वेरी गुड इवनिंग सर। Uh, I am really very unlucky वाई सर? because I lived very close to you for many, many years in my life.
and I am meeting you today when I am living very, very far. अच्छा, कहाँ रहते थे सर आप? I will talk to Dr. Pahuja sir tomorrow. Personal level, I will tell you everything. Okay, sir, fine. But the way you have conducted is really remarkable, and Thank you I so can much. see that I read somewhere that you are a teacher, so I can see that you are a marvelous teacher. Thank you so much, sir. So grateful to you. And someday, if I get a chance to come to Udaipur, definitely I'll make it a point. I want to share, one point that Yes, sir. while telling us about thank you, you were saying that these are not two words only, and you have to have a feeling inside. And then you said that you said that we are taught in childhood, and in childhood we learn how to say thank you. Ki auntie ko thank you bolo. That was a very good example. But when we grow up, we tend to forget it. I'll tell you, why our personal life and our the rules and regulations in the industry, why are they different, or in your workplace, why are they different? I'll tell you that in the industry in which I was, there at the level which I was, I had to write a lot of mails to people, whether they were vendors, customers, or whatever. And, not much of a thank you was used. Why? Mhm. Because it was considered to be too mild in the official terms. Yes, sir. Whereas in this book, which I have already gone through the 28 day, and you'll be happy to know, Dr. Pahuja knows that I'm writing a book on that. I'm Wow, sir. I'm a co-author. So while writing, I have learned that, thank you has to come from the heart, and it can be at your workplace. Yes. So there is a chapter on workplace. You know that there is Yes, a sir. chapter on workplace also. Chapter. Magic with works, something like that. So, Yes. so what my question, I'll make it short, is that why are the rules different in your personal life and your official life? There also people are doing such a lot of, your juniors, they अपनी जान दे के काम करते हैं. But thank you बोलने का मतलब we are, unnecessary trying to pamper them. ऐसा ही होता है सर. ऐसा लगता है कि जब बॉस थैंक यू बोलेगा तो जो सामने काम करने वाले ना सिर के ऊपर बैठ जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर, थिंग्स आर चेंजिंग. थिंग्स आर चेंजिंग. क्या हो गया, जैसे अभी आप बताइए नरेंद्र जी, अब आपने ये बुक पढ़ ली है, यू आर अ को ऑथर, आप वापस पढ़ रहे हैं हमारे साथ. आपके साथ जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आप किस तरह का रवैया अपनाएंगे उनके साथ? डेफिनेटली बहुत चेंज आएगा. डेफिनेटली इसमें कोई ना, ये दिस इज हाउ द व्हील हैज स्टार्टेड रोटेटिंग सर. इट विल डेफिनेटली रीच टू एवरीबॉडी. यदि जिसको लाइफ बदलनी है सर. अभी हमारे प्रोग्राम से पहले मैं हरीश सर के साथ बात कर रही थी कि मंदिर तो जहां पर है वहां रहता ही है. जिसने दर्शन मिलने होंगे, जिसके मन में ये उसकी चॉइस होगी कि मुझे आज दर्शन करना है, उसको जरूर मिलेगा. तो ये जो हम जिस जर्नी पर है ना सर, हम सब लोगों की एक जर्नी है. तो जिसने जो चाहा है उसको मिलेगा. वो कहते हैं ना सर, जिसके पास इतनी मानता हूं कि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में मालूम होता, ये चैप्टर मैंने ये बुक उस समय आप लोगों के साथ कर ली होती, तो मेरे को इंडस्ट्री में भी, इनफैक्ट इंडस्ट्री में ज्यादा जरूरत है थैंक यू बोलने की. देयर आर सो मेनी वर्कर्स हु वर्क अंडर अस एंड एट द वर्कर लेवल, एंड ये जो नया मैनेजमेंट थ्योरी आती है, इट इज ऑलवेज टू एक्नॉलेज, टू गिव ग्रेटिट्यूड टू देम. अब आप एक बात बताइए सर, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, किसी के साथ उसका बच्चा नहीं बैठा है, ठीक है? और फिर हम सब लोग सोचते हैं कि यार मेरे को इस एज में आके मिला है, छोटी होती मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता. तो जो चीज हमें नहीं मिली, हम भी तो नहीं दे रहे हैं आगे. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे पास किसके पास बच्चा बैठा है, हम किसकी लाइफ बदल रहे हैं? जी जी. तो वो बच्चा जो बड़ा होगा ना, वो यही लाइंस कहेगा जो आपने कही सर. बिल्कुल बिल्कुल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. थैंक यू Thank you, वेरी मच. sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Anybody would like to share something? You're most welcome, dear ones. किसी को कुछ कहना है, प्लीज कहिएगा. जितना आप कहेंगे, मैंने बहुत बार सुना है हरीश सर को कहते हुए आप सबसे. I would like to. Yes, sir. After doing this book with Asmin मैम जो कराती थी पहले, हम तो अभी छह गए, मेरे लाइफ में बहुत डिफरेंस आया.
खास करके मेरे काम में आई बिकेम मोर एंड मोर सॉल्यूशन प्रोन. मैं ऑप्टिमिस्टिक और ज्यादा बन गया. सो दिस इज व्हाट ग्रेटिट्यूड कैन डू. कुछ भी इशू आता है, आई जस्ट रिपीट दिस थैंक यू इन माई माइंड. यू वोंट बिलीव इट. कोई आदमी गर्म हो जाता है ना, तो मैं थैंक यू बोलते रहता हूँ अंदर अंदर. तो मेरे चेहरे पे जो भाव आते हैं ना, उससे वो आदमी शांत हो जाता है. वंडरफुल. इतना फर्क पड़ता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस मनीषा जी, थैंक यू सो मच हरीश सर. यस Good मनीषा evening. जी, वेरी गुड इवनिंग. मैम आई प्रैक्टिस थैंक यू, सेइंग थैंक यू. मतलब मैं सब्जी वाले से सब्जी भी लेती हूँ तो पैसे भी दिए तो भी थैंक यू, सब्जी लेके भी थैंक यू. बट वो फॉर्मली थैंक यू होता है, मतलब मुझे कोई बहुत इतना ग्रेटफुल नहीं फील होता. मतलब मुझे एक हैबिट है थैंक यू बोलने की. लेकिन जैसे आपने कहा कि वो फीलिंग्स के साथ आना चाहिए, तो मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, मैंने सब्जी ली, मैंने उनको पैसे दिए. बट मैं बहुत जल्द ये थैंक यू मतलब मेरे मुंह से तो बहुत बार निकलता है. तो मेरे थैंक यू में और ग्रेटिट्यूड में फर्क है. अभी एक बात बताइए माय डियर, वो सब्जी वाला कहाँ आता है? आपके घर के बाहर आता है? वो रोज आता है हमारे यहाँ, गल नहीं, घर बजाते के हैं, मैं जाती मतलब गली में, घर के हूँ बाहर गली. बाजू में आ जाते हैं? अब आप मुझे हाँ जी. बताइए, वो आपके घर के बाजू में ना आए, आपको सब्जी हाँ, तो लेने फिर जाना पड़ा, वापस जाके लानी पड़ेगी. तो कभी उस पहलू पे सोचिएगा कि मुझे पैदल जाके रोज सब्जी लानी पड़ेगी. आप मुझसे पूछिए, मैं को जाना पड़ता है लेने. तो अच्छा, मुझे मैं क्या, जैसे कुछ लेने भी जाती हूँ कहीं शॉप पे भी, मैं कहीं पर भी जाती हूँ, आई प्रैक्टिस थैंक यू. मतलब मेरी एक हैबिट है, मेरे मुंह से बहुत आता अच्छी है. बात इवन है. कुछ भी लेकर किसी से बात करते करते भी थैंक यू बोल देती हूँ. लेकिन वो उतना फीलिंग से है या नहीं वो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मेरी एक हैबिट है ये सिर्फ. अब आप उसको फीलिंग्स के साथ कैसे लाएंगे मैम? आप कॉन्शियसली बोलेंगे कि आप खुद को चेक करेंगे कि मैंने कैसा बोला. कभी तो खाली भी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि हर वक्त मतलब ये वाली वो वाली बात होगी कि मैं तो सत्संग जाती हूँ तो मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए. साहब, जितना भी सत्संग जाती हूँ मैं इंसान ही. पर हाँ, जहां मैं नीचे जा रही हूँ, मैं अपने आप को पकड़ के ऊपर जल्दी ले आऊं. अपने बारे मतलब में तो ये हर किसी को पता होता है. मैजिक बुक पढ़ने के बाद आप कतई ये मत सोचिएगा, मैं पहले दिन बोल रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरी लाइफ से सब कुछ वाइप आउट हो गया, सब बदल गया. ऐसा आई नहीं नो है. कि हाँ, मैं जिस आपके पास एक मैजिक वॉन्ड आ जाएगा जिससे आप चीजें बदल लेंगे, ये बात जरूर हो जाएगी. आई ऑलवेज गिव अ स्माइल टू इवन स्ट्रेंजर्स. मतलब तो मुझसे आपको जल्दी प्रॉब्लम कोई, कहाँ पर है फिर मैम? मुझे मेरे प्रॉब्लम मेरे घर में है. ओके, कभी अपन पर्सनल पे जुड़ते हैं, फिर अपन बात करते हैं. आपको ओके. यदि कन्वीनियंट हो तो अपन पर्सनल पे बात कर सकते हैं. एट एनी टाइम आप बता दीजिए वो हाँ, किस टाइम मैसेज कर पॉसिबल. दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी, मेरा फ्री टाइम. ओके, थैंक मैसेज यू. कर दीजिएगा. हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मनीषा जी. उमेश जी, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं, मेरा सॉल्व हो गया जो आपने कहा. ओके प्लस सर. मुझे कमेंट भी आई कि से थैंक यू टू योर पेंक्रियास के इट्स वर्किंग फाइन. So ग्रेट I'll सर. practice that also. Thank you, Miss. Thank you very much. Great session. God bless you, Miss. थैंक यू सो मच माय डियर. Thank you. सो आई थिंक टाइम भी हो गया है, और यदि किसी को कुछ और कहना है. Yeah, Ruchi ma'am, ये Sangeeta संगीता here. जी. है संगीता It was जी. nice session, loved it. थैंक यू सो Yeah, मच डियर. I would like to quote an incident. The Sunday early morning, it was a bit dark. We were going, me and my husband were going to the temple, but I was having this earphone and I was walking. The Okay. security was doing something. He was doing some work over there, and he turned. He looked at both of us and he said, "Good morning." But I was busy listening to something. I didn't notice that. So my husband said, he said, "Good morning to you. You didn't wish him back." So I felt so bad. So I said, stop at the security booth. And when we took our car, we stopped. And I looked at him and I said, sorry, I didn't hear. I was hearing to something else. So I didn't pay attention to you. Good morning. करके. उसको इतना अच्छा लगा. His day was done. Like early morning, it was around 5:30 or something. We were going to the temple. So I said, I'm sorry, I didn't notice. Very good morning. So I felt even more happy seeing his. See, that is what I meant. Uh, See, when yeah. you are grateful, you will be happy. That is Yeah. for sure. ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, साइन है. Right, dear friends? Earlier, might be if I had told, I would have just ignored him and I would have gone. I wouldn't have. No, अब तो मुझे थोड़ा सा humbleness भी आ जाता है. Wonderful. So, thank you, ma'am. Wonderful. Keep it up, my dear. Keep it up. So, my dear ones, we'll tomorrow meet at the same time, 9 p.m.
Thank you so much. See you tomorrow. Thank you all. Great. It was fantastic. मजा आ गया. Thank हरीश you भाई, so आपका much, मजा sir. आ गया जो वो सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया. Thank you so much. Okay. Thank you Peace everybody. bless Okay.